Welcome back to Tide and Loam. I am your instructor Hassaan, and in this video we are going to study the boundary of the cell, which is called cell membrane. So let's start with a brief introduction of cell membrane. All cells have a thin and elastic cell membrane around their cytoplasm. So cell membrane, the first keyword is all cells. Cell membrane is present in all the cells, whether it is a plant cell, animal cell, fungal cell or bacterial cell. Cell membrane is present in all the cells and its nature is thin and elastic. So cell membrane is thin and it is elastic, so it can mold into different shapes, and it is present around the cytoplasm. So we have three basic characteristics about cell membrane. The first is cell membrane is present in all the cells. The second thing is it is thin and elastic in nature, and the third thing is it is present around the cytoplasm. Now here we have a simple cell. This blue colored fluid is the cytoplasm of the cell, and around cytoplasm this purple colored boundary is cell membrane of the cell, and it is thin and elastic covering around cytoplasm. So cell membrane is a covering, cell membrane is a boundary which is present around cytoplasm, and it is thin and elastic in nature. Now why we study cell membrane, why cell membrane is actually present? To understand this, let me ask you a simple question. What if your school does not have a boundary? अगर आपके स्कूल की एक बाउंड्री ना हो, एक गार्ड ना हो और आपके स्कूल के कोई रूल्स ना हो, तो क्या होगा? Now down here we have two figures. This is a figure of the school with a boundary, and this is a figure of the school without no boundary, without no regulations, without no guard. अगर स्कूल की एक बाउंड्री होगी, स्कूल के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे और स्कूल का एक गार्ड होगा, तो स्कूल में सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट ही एंटर हो सकते हैं. लेकिन अगर स्कूल के अंदर कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो कोई भी स्कूल में एंटर हो सकता है. लाइक एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एन ओल्ड मैन इज एंटरिंग द स्कूल, some people are walking by the school, and a woman is carrying her baby and is passing by the school. So this is the difference between a school having a boundary and school does not having a boundary. In the same way, अगर सेल की कोई बाउंड्री ना हो तो सेल में कोई भी मटेरियल एंटर हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेल में ऐसे मटेरियल्स एंटर हो सकते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल है. सो इसी चीज से बचने के लिए, हार्मफुल मटेरियल से बचने के लिए सेल की एक बाउंड्री है जो मेंटेन करती है कि सेल में किस मटेरियल को एंटर होना चाहिए और सेल में किस मटेरियल को एंटर नहीं होना चाहिए. और टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म्स में हम इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि ये सिलेक्ट करती है कि किस मटेरियल को सेल में एंटर होना चाहिए और किस मटेरियल को सेल में एंटर नहीं होना चाहिए. सो इट एक्चुअली सर्व्स two functions. One of the function is it is the boundary, and the second function is acting as boundary. It selects which material should enter the cell and which material should not enter the cell. So let's define this function of cell membrane. It is selectively permeable membrane, which means it allows few materials to pass through it and for others act as a barrier. So cell membrane कुछ materials को अलाउ करती है कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सके और सेल के साइटोप्लाज्म में जा सके, लेकिन कुछ मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल्स के लिए सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बाउंड्री एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर इन द साइटोप्लाज्म. You can better understand it with the help of this following figure. In this figure, this is actually cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, and inside the cell membrane this is a gate. और इस गेट में से सेल मेम्ब्रेन इज अलाउइंग ओनली ग्रीन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन के से पास कर रहे हैं, बट द रेड मॉलिक्यूल्स दे आर स्टेइंग आउटसाइड द सेल बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द सेल. सो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है कि किस मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन में से गुजरना चाहिए और किस मटेरियल को सेल में से नहीं गुजरना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज वेल. Now, what is chemical composition of cell membrane? Basically, cell membrane is made up of three things. The first thing is protein, which are in 60 to 80%. So, cell membrane की composition में 60 to 80% proteins हैं. 20 to 40% cell membrane की composition में lipids हैं, and a small amount of carbohydrates is also present.
So cell membrane की composition में तीन चीजें हैं, protein which are 60 to 80%, lipids which are 20 to 40%, and a very small amount of carbohydrates is also present. और carbohydrates present हैं in the form of conjugated molecules. So what are conjugated molecules? When two molecules combine, a new molecule forms, and that new molecule is called conjugated molecule. For example, glycoprotein. And glycoprotein is formed by the combination of carbohydrates and protein. So जब carbohydrate और protein मिलते हैं तो जो नया molecule बनता है, जो conjugated molecule बनता है, that is called glycoprotein. And when carbohydrates and lipids combine, they form a new molecule which is called glycolipid. So carbohydrates are present in the form of conjugated molecules, and these conjugated molecules are glycoprotein and glycolipid. So cell membrane की composition में तीन चीजें हैं, proteins which are 60 to 80%, lipids which are 20 to 40%, and a small amount of carbohydrates. And carbohydrates is present in the form of glycoprotein and glycolipids. Now let's label these things in this structure of cell membrane. This is the structure of cell membrane. As you can see here, this whole is the structure of cell membrane, और इस structure में ये जो pink bubble और green stick है, that is actually lipids. And these are present in up two layers. This is upper layer of the lipids and this one is the down layer of lipids. तो ये जो pink और green molecule हैं, these are the molecules of lipids. और इन lipids के साथ this green molecule is the molecule of carbohydrates. This is the molecule of carbohydrate and here it is combined with the lipids. As you can see in the picture, ये जो pink bubble green molecule के साथ attached है, this is glycolipid. Because it is attached with the lipid, carbohydrate is attached with the lipid. That's why it is glycolipid. As you can see here, this is glycolipid, which is a pink and green molecule. This whole is called glycolipid. Now here, this blue structure is actually protein and this green structure is carbohydrate. और जब protein और carbohydrate मिलते हैं तो जो structure बनता है, that structure is called glycoprotein. So this is glycoprotein. These purple structures are proteins and this green structure is cholesterol. Cholesterol is also lipid. So you can see these three components of cell membrane in this figure. If you do not understand it, don't worry. In the next figure, I'll explain it again. Now we have structure of plasma membrane. Composition को हमने study कर लिया. Now we have the structure of plasma membrane. और scientist प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मदद से. यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. और इस मॉडल का मतलब है कि लिपिड के फ्लूइड में प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फ्लोटिंग इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है कि लिपिड्स के फ्लूइड में प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक. Now here we have the fluid mosaic model. This is fluid mosaic model. This whole figure is of fluid mosaic model. इस मॉडल में सबसे पहले there is a lipid bilayer. यानी कि as in the previous figure we saw that this is a lipid layer and this is a lipid layer. And these two layers together form lipid bilayer. ये लिपिड की एक लेयर है और ये लिपिड की दूसरी लेयर है and these two layers form lipid bilayer because there are two layers of lipid. That's why it is called a bilayer. Now these are lipids and this green molecule is a carbohydrate and this carbohydrate molecule is attached with the lipids, therefore it is formed a conjugated molecule which is called glycolipid and which is a combination of glucose and lipid. This purple structure is protein and this protein molecule is attached with the carbohydrates and that is why it is called a glycoprotein because it is a combination of carbohydrate and a protein. This is another glycolipid molecule. This red structure is cholesterol, which is also a lipid. Now in the structure of plasma membrane there are two types of proteins. The one protein which is present throughout the structure of plasma membrane, which is completely embedded in the structure of plasma membrane, is called intrinsic or integral protein. And the one which is present on the surface.
As you can see here, this protein is present on the surface. It is not completely embedded in the bilayer. It is present only on the surface. That is why it is called extrinsic or peripheral protein. So this is the structure of plasma membrane. Let me revise it for you. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लिपिड बाइलेयर, यानी कि हमारे पास लिपिड की दो लेयर्स हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं. वी हैव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर. वी हैव अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्टेरॉल. And this is the structure of fluid mosaic model. This is actually called fluid mosaic model, यानी कि lipids के fluid में proteins are present in the form of mosaic manner, and that is why it is called a fluid mosaic model. Now let me help you understand it with the help of another analogy. So here we have an analogy of iceberg in ocean water. This is an iceberg and all this is ocean water. The rest of it is ocean water. यानी कि जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि this iceberg is floating in the ocean water. This whole iceberg is floating in the ocean water. In the same way, fluid mosaic model में lipids का जो पूरा fluid है, lipids का जो पूरा sea है, उसमें proteins float कर रही हैं in the same way as this iceberg is floating in the water. So in this analogy, protein is iceberg and lipid bilayer is ocean. So जिस तरह ocean water में एक आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, इन द सेम वे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, लिपिड के फ्लूइड में, लिपिड के ओशन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मोज़ेक मैनर में फ्लोट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. पिछली कंपोजिशन वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि सेल के स्ट्रक्चर में 60 to 80% प्रोटीन्स हैं, जबकि 20 to 40% लिपिड्स है. लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो दीज आर लिपिड्स आर एवरीवेयर. ये पूरा स्ट्रक्चर, इसमें लिपिड ज्यादा नजर आ रहे हैं और प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट डिस्टेंसेस. एज यू कैन सी हियर, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन. सो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट डिस्टेंस. तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि सेल के स्ट्रक्चर में प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन कम और लिपिड ज्यादा है, बट दिस इज नॉट द ट्रू. You can understand this with the help of stones tied up in a string analogy. अब अगर आप कुछ stones लें और उन्हें एक धागे से बांध दें, so as you can see here, इस arrangement में किसका mass ज्यादा होगा? Obviously stone का mass thread से ज्यादा होगा. In the same way, cell membrane में भी यही केस है कि जो cell membrane में proteins है, they are heavier in mass. Proteins are as stones and lipids are as strings. So जो lipid molecule हैं, they are light in weight, they just act as string. On the other hand, protein molecule act as stones, they are heavier. That is why protein molecules are 60%, protein molecules are 60%. On the other hand, lipid molecules are only 40%. यही रीजन है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड कम है. Moving forward to the last topic, which is cell membrane and plasma membrane. So basically this is not a huge difference. इसमें कोई structural या functional difference नहीं है. It is just a difference of terminology. यानी कि दोनों के नाम में difference है, cell membrane और plasma membrane में. So cell के अंदर और भी कई तरह की ऑर्गेनेलीज है. फॉर एग्जांपल सेल में न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस. So they all have membranes और collectively इन सब की membranes are called cell membrane. यानी कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी हर ऑर्गेनेली के पास जो मेम्ब्रेन है, उन्हें collectively जो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं, that is actually cell membrane. और जो सेल को सराउंड किए हुए मेम्ब्रेन है, जो सेल की बाउंड्री है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि साइटोप्लाज्म को जो सराउंड किए हुए मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन हैज अ पर्टिकुलर नेम एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
सो यही बेसिकली डिफरेंस है कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, लेकिन जो सेल को सराउंड किए हुए मेम्ब्रेन है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.